Hello everyone and welcome to Shifting Gears and welcome inside the 2023 Honda Elevate. Honda के लिए ये एक बहुत ही important product है. This is their first serious attempt in this mid-size SUV category. Honda Elevate की competition होगी with the likes of Hyundai Creta and Kia Seltos and also the MG Aster. इसके पहले होंडा ने अपनी BRV भी इंडियन मार्केट में लॉन्च की थी, बट वी नो दैट इट वाज बेस्ड ऑन द मोबिलियो एंड द मोबिलियो वाज एन MPV. दिस इज अ प्रॉपर SUV व्हेन यू लुक एट इट एंड मेरे हिसाब से इट इज अ डिसेंट लुकिंग कार फॉर श्योर. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ डज दिस होंडा एलिवेट फील फ्रॉम बिहाइंड द व्हील जब आप इसे चला रहे हो. दिस इज अ ड्राइव रिव्यू वीडियो. हमने एक अलग वीडियो अपलोड किया है वेयर वी टॉक अबाउट द एक्सटीरियर डिजाइन हाइलाइट्स ऑफ दिस कार एंड वी ऑल्सो हैव अ सेपरेट वीडियो जहां पे हम बात करते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर कैबिन के बारे में, स्पेस के बारे में और ओवरऑल क्वालिटी के बारे में. So now is a good time to subscribe to the Shifting Gears channel, press that bell icon so that every time we upload a new video for this Honda Elevate, you get a notification ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड कार बाइंग डिसीजन ले सकें. अभी सबसे पहले ये ड्राइव वीडियो शुरू करने से पहले लेट अस टॉक अबाउट द स्पेसिफिकेशन, लेट अस टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट नंबर्स. बट बिफोर वी गेट टू द नंबर्स लेट मी क्लैरिफाई, होंडा एलिवेट आपको सिर्फ एक सिंगल पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ मिलने वाली है. यू विल नॉट गेट अ डीजल इंजन ऑप्शन, दैट इज नॉट इन द पाइपलाइन एट ऑल. There will be no diesel Elevate ever. Honda ने इस गाड़ी के लिए कोई हाइब्रिड वेरिएंट भी अनाउंस नहीं किया है and they say that the Elevate has been developed keeping in mind that in 3 years time Elevate आपको एक full electric avatar में मिल जाएगी here in the Indian market. So I think even a hybrid Elevate is not on the cards at least for now or for the foreseeable future. So if you want a different option of what is under the hood with this Elevate, आपको सिर्फ एक इलेक्ट्रिक का ऑप्शन मिल जाएगा, बट देन दैट इज अ लॉन्ग टाइम अवे. चलिए अभी बात करते हैं इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में. Honda Elevate के साथ आपको मिलती है एक 1.5 लीटर 4 सिलेंडर IV-Tech पेट्रोल इंजन. दिस इज नॉट टर्बोचार्ज्ड, दिस इज अ नेचुरली एस्पिरेटेड यूनिट. ये इंजन बनाती है 121 PS ऑफ पावर एट 6600 RPM and 145 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क एट 4300 RPM. होंडा का कहना है ये एलिवेट आपको डिलीवर करेगी 16.92 kmpl माइलेज विथ द CVT and 15.31 kmpl माइलेज with the manual gearbox. So the automatic Elevate is actually more fuel efficient. इस गाड़ी के साथ जो आपको मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है दैट इज अ 6-स्पीड यूनिट, और ये जो CVT गियरबॉक्स आपको मिल रहा है इसके साथ भी आपको पैडल शिफ्टर्स मिल रहे हैं एंड व्हेन यू ड्राइव इट हार्ड इट ट्राइज टू मिमिक अ गियर शिफ्ट. सो इट इज नॉट अ बोरिंग CVT व्हिच विल टायर यू विथ इट्स रबर बैंड इफेक्ट. इस गाड़ी के साथ आपको 40 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है, 5.2 मीटर्स का टर्निंग रेडियस है, 17 इंच के व्हील्स का ये गाड़ी इस्तेमाल करती है ऑन दी टॉप ट्रिम्स, और 220 मिलीमीटर्स का आपको इस गाड़ी के साथ ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है. नाउ सबसे पहले बात करते हैं NVH पैकेज के बारे में. दिस इज अ पेट्रोल होंडा, सो यू एक्सपेक्ट रिफाइनमेंट. अभी जब मैं इस गाड़ी को चला रहा हूं अराउंड उदयपुर आउट ऑन द हाईवे एट क्लोज टू 70 किलोमीटर्स पर आवर, इट फील्स नाइस एंड रिलैक्स्ड. हल्का सा टायर नॉइज जरूर कैबिन में सुनाई दे रहा है बिकॉज वी डिड नोटिस दैट अराउंड द व्हील आर्च एरिया व्हील्स के पीछे ज्यादा साउंड डेडनिंग क्लैडिंग नहीं है. सो मे बी दैट इज रिजल्टिंग इन दिस नॉइज हर्ड इनसाइड द कैबिन. एंड ऑल्सो जब आप इस गाड़ी को हाईवे स्पीड पे चला लोगे आपको थोड़ी विंड नॉइज कैबिन में डेफिनेटली सुनाई देगी, बट एट 60 to 80 किलोमीटर्स पर आवर आपको कैबिन के अंदर इंजन नॉइज जो है वो ज्यादा सुनाई नहीं देगी. राइट नाउ आई एम ड्राइविंग द CVT ऑटोमेटिक वर्जन ऑफ दिस Honda Elevate, and if you have a gentle right foot, this will be a very relaxing and comfortable car to drive because CVT gearbox होने की वजह से
you will keep picking up very progressive momentum और आपको ज़्यादा jerks भी feel नहीं होंगे. लेकिन typical CVT gearbox engine noise की अगर बात करें, so let me use the paddle shifters right now to downshift. Listen to the engine now. इतना इंजन नॉइज आपको कैबिन में सुनाई देगा, बट व्हेन यू डू दैट इट एक्चुअली साउंड्स क्वाइट स्पोर्टी. एंड लेट मी टेल यू दैट जब आप इस गाड़ी को पुश कर रहे हो, it doesn't sound too bad, but it is not as orally pleasing like say for example a Venue N line, because उसमें आपको वो स्पोर्टी एग्जॉस्ट सिस्टम भी मिलता है. बट ओवरऑल दिस इज नॉट बैड. लेट मी पुल ओवर टू द शोल्डर. अभी मैं एंगेज करूंगा इस गाड़ी का न्यूट्रल गियर एंड लिसन टू द इंजन नाउ. टिपिकल ऑफ अ होंडा वीटेक, साउंड्स क्वाइट नाइस. और जब आप हार्ड एक्सेलरेट करने वाले हो, राइट नाउ आई हैव स्लॉटेड इट इन स्पोर्ट मोड एंड इन 3, 2, 1 full pedal to the metal. You can notice that the gearbox is trying to mimic a gear shift, but this is a CVT and we had already touched 120 kilometers per hour, and for a CVT gearbox I think this is not bad at all. The acceleration is quite brisk, but of course competition जो है it is offering you a much more powerful turbocharged petrol engine option, and you are not getting that with the Elevate. One more time, pulling over to the shoulder. अभी भी मैं स्पोर्ट मोड ही एंगेज करके रख रहा हूं, and this time I am going to take manual control. So right now the drive computer is showing me that I am in SM1 mode. So in 3, 2, 1 full pedal to the metal. These upshifts are not bad at all, and for a CVT this kind of a gearbox simulation is actually quite engaging, and we are at serious triple digit speeds right now and it is still continuing to pull. So ये चीज काफी बढ़िया है. And this CVT by the way, it has a 7-step setting जब आप पैडल शिफ्टर्स यूज करते हो. So you can mimic 7 gear shifts when you are playing around with these paddle shifters. So it is quite fun. We are talking about the gearbox right now. So let me tell you that you have 2 modes, drive and sport. So D mode और S mode आप switch कर सकते हो. So check this out. S mode में से D mode engage करने के लिए all you have to do is just push the gear stick ahead. To engage sport mode you have to press the button and then pull it into sport mode. Now you know what it does. Sport mode में gearbox जो है it will stay a little bit more eager ताकि आपको better acceleration मिल सके. D mode is going to be for optimized comfort and efficiency. If I downshift, these downshifts are also reasonably quick. तो अगर आपको कहीं किसी घाट सिचुएशन में फास्ट पेस्ड ओवरटेकिंग मैन्यूवर्स करने हैं, the gearbox will not let you down. It is fairly engaging, but then of course आपको पता ही है that it is not going to be as fun as a DSG, a DCT, and of course it is not a torque converter either. लेकिन सिटी ड्राइविंग के लिए ये जो CVT gearbox है, this is going to be fantastic. It is going to offer you that seamless, jerk-free driving experience. And जो भी एक गाड़ी खरीद रहा है, he is primarily going to commute in that vehicle.
and for commuting purpose a CVT makes a lot of sense, and that is why Honda has been sticking with this gearbox for a really long time. आपने Honda City के साथ भी देखा है that they offered a CVT. The Jazz also used to get a CVT. The Amaze also gets a CVT. So Honda thinks that this gearbox is ideal for the Indian driving condition, and I think that it is good enough. Paddle shifters जो हैं, they are of the right size, so they fall in your hand ideally when you want to just drive a little enthusiastically. But overall, अगर आप ये Honda Elevate खरीद रहे हो, this car is going to be purchased by those making a sensible choice, a head over heart kind of a decision, because इस गाड़ी में ज़्यादा कोई fancy features नहीं है which are going to lure you into buying this car. It lacks quite a few features, quite a few feel-good features which the competition is offering you. But then if you want reliability, if you want Honda's typical man maximum, machine minimum kind of space packaging on the inside, this is a brilliant product. It is not bad at all. It is just that, you know, there is no cherry on the cake, but this is a good cake. So wrapping things up about the gearbox, PRNDS, these are the only modes. Okay, drive mode and sport mode is of course to move ahead. Paddle shifters आपको मिल रहे हैं, 7-step paddle shifters, so it is quite fun whenever you want to have that extra bit of fun. कोई भी drive mode नहीं है. There is no eco mode either. There is no econ mode button which I can see, which was a typical Honda feature. Nothing of that sort. इस गाड़ी में automatic start stop functionality भी आपको नहीं मिलती है. So when I say that it is lacking equipment, I am quite serious about it, because आपको ये सारे छोटे छोटे फीचर्स भी नहीं मिल रहे हैं जो अभी आपको स्कूटर सेगमेंट में भी मिल जाते हैं. So I think Honda needs to take that equipment list a little seriously, because it does add weight in the brochure and it helps that salesperson convert into a sale, a query into a sale. Now talking about the engine, ये जो 1.5 liter 4-cylinder naturally aspirated petrol block है, this has been in the Indian market for a really long time. You have seen it do duty in the city for ages, and it is now the same hardware under the hood of this Honda Elevate. लेकिन of course software optimization हुआ है. This is a brand new car. Otherwise it is a new chassis, the top hat is completely new, everything is new for the Elevate except for that motor. Now इस engine के साथ कोई भी problem हमें नहीं है. There is nothing that is bad or wrong with this motor. It is just that it is so familiar that it might not seem exciting to some people who have driven a Honda car even a decade ago. So the motor just continues, but it is reliable, so you will get that for sure. Reliability might be top notch, but we will have to wait and see. ये engine जो है, it has decent performance, it has good enough of that horsepower number. Torque output भी इस सेगमेंट के इस इंजन कैपेसिटी के हिसाब से एडिक्वेट है, एंड एज यू कुड नोटिस जब हम हार्ड एक्सेलरेट भी कर रहे थे, इट हैज इनफ पोक टू पुश यू फॉरवर्ड. सो इट इज नॉट अ बोरिंग इंजन एट ऑल, बट इट माइट नॉट बी एन एक्साइटिंग मोटर, एंड दैट इज फॉर श्योर. हमने रिसेंटली ही किया सेल्टोस चलाई थी विद दैट 160 PS turbocharged motor, and that car just flies. But this, as a sensible purchase, for what it can do, for what Honda thinks this should do, it is doing it just right. So the engine and gearbox, although it is not something to harp about, it is sensible, it is reasonable, it is practical, and for what you intend to do with an SUV, for what you intend to do with a car inside the city, ये गाड़ी उन सभी पैरामीटर्स पे डिसेंट डिलीवरेबल आपको ऑफर करने वाली है. अभी चलिए बात करते हैं इस गाड़ी के राइड क्वालिटी के बारे में. नाउ दिस Honda Elevate is riding on 17-inch wheels. ग्राउंड क्लियरेंस 220 मिलीमीटर्स का है, एंड let me tell you, I have been very impressed with the ride quality. It is very comfortable. Now this is more comfort oriented compared to competition.
इट जस्ट सोक्स अप द बम्प्स वेरी वेल। काफी अच्छी तरह से आपको एक कुशनी राइड क्वालिटी फील होती है व्हेन यू आर ड्राइविंग ओवर बैड रोड्स। आपको ज्यादा झटके फील नहीं होते हैं। आज जब हम उदयपुर के खराब रास्तों पे से इस गाड़ी को चला रहे थे, द रोड वॉज रियली ब्रोकन। वी वर बीइंग मूव्ड अराउंड इन द सीट क्वाइट अ बिट, but my bottom did not feel that broken terrain at all. The ride quality is that good and it will keep you, the commuter, very happy. तो अगर आप इस गाड़ी में डेली कम्यूट्स करने वाले हो to your office, if you're going out on a long drive, the ride quality will keep you at peace. एक चीज जो बेटर हो सकती थी was under thigh support in the front seat and also in the rear seat. If that was even better than what it is right now, it is actually lacking right now, तो आपका ओवरऑल जो ड्राइव एक्सपीरियंस है वो और बेटर हो जाता, because you would have gotten better support even from the seat. So that is a finer negative which I want to tell you, but more about that in the interior review video, so do check that out as well. Ride quality out on the highway, it is nice and flat. जब मैं ये कह रहा हूँ that it is comfort oriented and it is very cushiony, it is not causing too much of vertical movement. ज़्यादा waftiness feel नहीं हो रहा है. Right now I am driving close to 90 to 100 kilometers per hour and it is just soaking it up so well that I am very happy as a driver behind the wheel of this Honda Elevate. बिल्कुल भी झटके फील नहीं हो रहे हैं and when you are making such lane changes as well, ज़्यादा बॉडी रोल भी नहीं है. 220 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस है. सस्पेंशन कंफर्ट ओरिएंटेड है, लेकिन अगर आप सडन लेन चेंजेस कर देते हो, यू नो, इट इज नॉट समथिंग दैट इज गोइंग टू स्केयर यू. गाड़ी जो है काफी प्रेडिक्टेबल तरीके से हैंडल होती है एंड इट गिव्स यू अ गुड आइडिया ऑफ, यू नो, वेयर द व्हील्स आर पॉइंटेड एंड व्हाट यू आर डूइंग विद द कार. इस गाड़ी में बाय द वे आपको लेवल 2 ADAS फीचर्स भी मिलते हैं, सो यू नो दैट विल ऑल्सो एंश्योर योर सेफ्टी. ओवरऑल व्हेन यू आर ड्राइविंग हार्ड एंड फास्ट, जब आप कॉर्नर्स एनकाउंटर करते हो लाइक वी आर राइट नाउ, व्हेन यू अटैक कॉर्नर्स, आई एम एट 100 किलोमीटर्स पर आवर. गुड राइड क्वालिटी, कंफर्टेबल राइड क्वालिटी. नाउ दिस इज नॉट स्टिफ बाय एनी मीन्स. जब आप इस तरह से कॉर्नर्स भी एनकाउंटर करते हो एंड मिड कॉर्नर अगर आप कोई बम्प भी एनकाउंटर कर लोगे, झटके फील ही नहीं हो रहे हैं. सो you know, quite a lot of people might think that the Honda Elevate is a vanilla car in the segment, but you know what, whenever you order a dessert, you get an extra scoop of vanilla with it and you can never go wrong with that vanilla. So this is the same formula जो Honda ने apply किया है. It is just right. Now since we are talking about ride quality, let us also talk about the steering wheel feel and feedback. Now this is an EPS unit. Honda ने कहा है that they have worked hard on delivering good feel and feedback जब आप इस गाड़ी को तेज चला लेते हो, and I think it is neutral. It is not very feel and feedback rich, but it is not lifeless at all, and even with the slightest of input there is some direction change. So center में ज़्यादा कोई dead area भी नहीं है. So this Honda Elevate with this steering wheel, it will keep you at peace. Also जब आप हाईवे पे इस गाड़ी को चला रहे हो, the steering wheel stays light at all times. I wish that it weighed up a little more, ताकि अगर आप ज़्यादा तेज इस गाड़ी को चला लेते हो, you know, it made you feel that heft. But then you know you have those ADAS level 2 features as well. तो उन्हें जब आप एक्टिव रखते हो, the steering wheel is trying to do its own thing as well. So couple that with a heavier steering wheel, you would have had to fight the wheel a lot more to do what you want to do. So I think it is decent whatever Honda has managed to deliver. A few minutes back जब हम corners भी encounter कर रहे थे, when I was driving at 100 kilometers per hour through a corner, I had reasonable feel about how I was driving the car, and the steering wheel overall did not make me feel nervous. And in such a situation, if you just want to very quickly make a lane change and just overtake slow moving cars, it is an easy task in this Honda Elevate. But it is just that अगर आप fast corners के through
क्विक कॉर्नर्स के थ्रू गाड़ी फास्ट चलाना चाहते हो, the steering wheel might feel a bit too light and at that time you will have to be a little cautious. So आप इस गाड़ी को जरूर टेस्ट ड्राइव कीजिए and you let us know what you think about the overall dynamics of this Elevate. क्या आपको ये गाड़ी पसंद आती है या नहीं? The next point to talk about are the brakes. इस गाड़ी के साथ आपको डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं at the front, not at the rear. Braking performance is par for the course, adequate है. ब्रेक पेडल को जब आप टैप करते हो, इनिशियल पेडल टैप पे भी आपको ब्रेक बाइट मिलती है एंड इट इज अ नाइस जेंटल ग्रैब ऑफ द ब्रेक. सो ज्यादा शार्प ये ब्रेक पेडल नहीं है. सो व्हेन यू वांट टू ब्रिंग इट टू अ हॉल्ट इन टाइम्स ऑफ एन इमरजेंसी, आपको डर नहीं लगेगा. इट इज अ सेफ एंड प्रेडिक्टेबल कार टू ड्राइव एंड अंडरस्टैंड. पहली बार मैं इस गाड़ी को चला रहा हूं आज एंड it just took me a few minutes to understand everything about it. Now the brakes are good. Let's talk about the tires. Really big wheels and quite impressive on a Honda. आपने देखा है that on the City, on the Jazz, on any other Honda car previously, the tires were very skinny. इस पे वैसा नहीं हो रहा है. You have wide contact patch tires and the grip levels have been good. खराब पैच पे जब हम इस गाड़ी को चला रहे थे, थोड़ी गीली सड़क भी हमने एनकाउंटर की. राइट नाउ वी आर ऑन अ नाइस टारमैक रोड. गुड ग्रिप ऑल थ्रू आउट. जब हम हार्ड एक्सेलरेट भी कर रहे थे, ड्यूरिंग हार्ड एक्सेलरेशन ऑल्सो द टायर्स गेव अस इनफ ग्रिप. ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम डिड नॉट हैव टू किक इन एट ऑल. सो टायर्स भी दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब. Honda has made a choice of offering you a flat bonnet ताकि इस गाड़ी को वो टिपिकल बॉक्सी एसयूवी अपीयरेंस मिल सके. द फ्रंट एंड हैज अ लॉट ऑफ फ्लैट डिजाइन हाइलाइट्स, जिसकी वजह से ये गाड़ी एसयूवी दिखाई देती है. नाउ द गुड थिंग अबाउट दैट इज, अभी मैं इस एलिवेट को चला रहा हूं एट द लोएस्ट सीट हाइट. आई डबल चेक्ड दैट फॉर यू. मेरी हाइट है 5 feet 8 inches एंड आई हैव अ वेरी क्लियर व्यू ऑफ द बॉनेट. मुझे बॉनेट कंप्लीटली दिखाई दे रही है. These mirrors are also super large. Inside rear view mirror भी काफी बड़ा है. So you have a very good view of where you are driving and what you are leaving behind. So ये गाड़ी समझने के लिए काफी आसान है. So if you share this with your friends, family members, your parents, brother, sister, whoever, सभी को ये गाड़ी समझने में ज्यादा देर नहीं लगेगी. And because the visibility is so good, ये गाड़ी चलाने के लिए काफी आसान हो जाएगी. पार्क करने के लिए भी काफी आसान होगी. ऑल्सो वन वेरी यूनिक थिंग दैट आई नोटिस्ड, अगर आप इस गाड़ी के बैक सीट में भी बैठोगे, बैक सीट में से भी आपको गाड़ी की बोनेट काफी क्लियरली दिखाई देती है. सो इट इज ऑफरिंग यू दैट टिपिकल फ्लैट बोनेट एसयूवी डिजाइन स्टाइल एंड इट शोज इवन फ्रॉम द बैक सीट. सो डू यू लाइक सच डिटेल्स? आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा. ergonomics के मामले में मुझे कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है. द स्टीयरिंग व्हील फील्स ऑफ द राइट साइज, लेदर रैप्ड, नॉट अ फ्लैट बॉटम व्हील. ऑल द कंट्रोल्स ऑन द व्हील आर गुड इनफ टू एक्सेस एंड ऑपरेट. बटन्स आर गुड. बटन की क्वालिटी काफी अच्छी है. ये जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, आई एम ग्लैड दैट दिस इज नॉट अ टच यूनिट. सो दिस विल बिकम मसल मेमोरी जब आप इसे खरीद लेते हो, इस गाड़ी को खरीद लेते हो. ये जो पॉपिंग अप टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट है, it might look like it is popping up way too much and look a little too big, but let me tell you, विंडस्क्रीन की जो लोअर लाइन है उसके नीचे ही ये खत्म हो जाती है जब आप गाड़ी चलाते हो. सो इट इज नॉट ईटिंग अप इनटू योर ड्राइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू. फील्ड ऑफ व्यू में ये टच स्क्रीन जो है, इट इज नॉट कॉजिंग एनी इंटरप्शन एट ऑल. सो ऑल दीज स्मॉल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट जब आप कोई गाड़ी खरीद लेते हो. एंड Honda has tried to ensure that they offer this vehicle to you in a completely inoffensive package with everything just right. But the thing is, they have not gone over the top, so it just lacks that spice. एक चीज जो मैं चाहता हूं that it should have been better is this armrest. It is way too small and it even doesn't slide forward, so it doesn't offer you that extra bit of support जब आप इस गाड़ी को चला लेते हो. Of course, you need to have both your hands on the wheel for a better driving experience and for a safer driving experience. But
This armrest, it should have been either longer or a sliding armrest. When you're coasting between 70 to 80 kilometers per hour, when you're cruising between 70 to 80 kilometers per hour, it is a good experience inside the cabin of this Elevate. So overall, अगर आप ये गाड़ी खरीदना चाहते हो, let me tell you that it is really a good car. It is not a great car when you consider talking points, when you consider highlights, when you consider all those segment best, segment leading features. वो सारी चीजें इस गाड़ी में नहीं है. But what you are getting is not bad at all. काफी बार जब हम कोई गाड़ी खरीदने के बारे में सोचते हैं, we look at all the extensive features list, but then try to think, how many of those features do you use on a daily basis? How many times do you even open a sunroof अगर आपकी गाड़ी में कोई sunroof available है? इस गाड़ी में by the way कोई panoramic sunroof नहीं है. You do have this standard sized sunroof और मुझे इसके साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. The problem with panoramic sunroofs in India is that because of that really large glass section up top, in summer season especially, आपको heat cabin में feel होती ही है. Now with a panoramic sunroof, you can't really have a very thick, dense curtain which slides because it has to roll back that much and it has to occupy space. This is just so easy. This is so thick that it insulates that hot temperature when you're driving this car under top sun. So I don't know. I mean, I am a Honda guy, if you have to call me that. I own a Honda Jazz ID Tech manual. I have the Honda City 5th generation, again the ID Tech manual, and to me this Elevate doesn't come across as a bad car at all. But I am not justifying the lack of features at all. Honda had so many years to consider what they need to offer in this vehicle, in a car in this segment, and they could have done a much better job at it. It lacks features and you will feel that अगर आप इस गाड़ी को कंसिडर कर रहे हो, even if you are cross shopping between a sedan and this SUV. So अगर आप किसी दूसरे ब्रांड की सेडान भी कंसिडर करते हो, उन कार्स में भी इससे ज्यादा फीचर शायद अवेलेबल हैं. सो इट इज व्हाट इट इज. इसके बारे में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे. ओवरऑल ड्राइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू से आई एम वेरी कंफर्टेबल. यू हैव अ डेड पेडल विच इज रीजनेबल टू रेस्ट योर लेफ्ट फुट. ऑफ कोर्स अभी हम इस गाड़ी का CVT गियर बॉक्स ऑप्शन चला रहे हैं, सो दिस इज अ 2 पेडल ड्राइव. लेकिन अगर आप मैनुअल गियर बॉक्स वेरिएंट भी खरीद लोगे, you have reasonable space to rest your left foot to the left hand side of the clutch. Manual variant का वीडियो भी it will follow, it will continue in this video, so keep watching. अभी मैं चला रहा हूं इस Honda Elevate का 1.5 लीटर पेट्रोल मैनुअल गियरबॉक्स वर्जन, and the most nonsensible thing to do is to come to a standstill and let us launch this car hard. नो ड्राइव मोड्स, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है. नो ऑटो स्टार्ट स्टॉप फंक्शनैलिटी ईदर. नो स्पोर्ट मोड, नो इको मोड. ऑल द कंट्रोल इन योर हैंड्स एंड विथ योर राइट फुट एंड ऑल्सो विथ योर लेफ्ट फुट, बिकॉज अभी मैनुअल गियरबॉक्स वाला वेरिएंट हम चला रहे हैं. सो स्लॉटिंग इट इन फर्स्ट एंड इन 3, 2, 1 फुल पेडल टू द मेटल. Revs till 7,000 RPM. Second gear crosses 80 kilometers per hour, and when it hits the rev limiter, it is quite a jerk that you feel, and in no time you are at serious triple digit speeds. So typical of a Honda VTEC engine and gearbox combination, this Elevate is also quite fun जब आपको इसे तेज चलाना है and when you want to stretch its legs. Gearbox जो है, by the way, check this out, 6-speed manual gearbox, leather wrapped gear stick and short throws हैं. Gearbox काफी smooth है, notchiness बिल्कुल भी नहीं है, and gear gates are also well defined.
क्लच ऑपरेशन जो है वो भी ज़्यादा लंबा नहीं है, ज़्यादा लंबा ट्रैवल नहीं है, एंड यू नो इट इज़ अ मीडियम एफर्ट क्लच. तो अगर आप ये वेरिएंट भी खरीद लेते हो, इट इज़ नॉट गोइंग टू टायर यू इन योर ओनरशिप साइकिल जब आप इस गाड़ी को ट्रैफिक सिचुएशंस में चला लोगे. आई एम गोइंग टू पुल ओवर टू द शोल्डर वन मोर टाइम एंड आई विल स्प्रिंट हार्ड वन मोर टाइम. ऑलराइट, सो लेट्स चेक द सराउंडिंग्स. Stand still, first gear, and in 3, 2, 1, listen to the engine. Sounds quite nice, and you can't deny that there is still some charm in revving the nuts out of a petrol powered naturally aspirated engine. And Honda with their IV-Tech engines, they are still so pleasing to drive. अभी कोई गियर पोजीशन इंडिकेटर या गियर शिफ्ट असिस्ट आपको नहीं मिलता है इस वेरिएंट के साथ. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द गियरिंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ द इंजन एंड गियर बॉक्स रिस्पॉन्ड्स एट अ पर्टिकुलर स्पीड, और फिर आपको अप शिफ्ट या डाउन शिफ्ट करना है. बाय द वे, यू टर्न लेते समय जस्ट चेक इट आउट दैट द टर्निंग रेडियस इज ऑल्सो क्वाइट रीजनेबल, सो इट इज नॉट टू डिफिकल्ट अगर आपको सडनली आपकी गाड़ी ऑपोजिट डायरेक्शन में चलाने का मन हो जाता है. एंड द स्टीयरिंग व्हील इज ऑल्सो क्वाइट लाइट. नाउ चेक दिस आउट. आई एम इन थर्ड गियर एंड वी आर गोइंग uphill. The speed is dropping to 20 kilometers per hour. इस सिचुएशन में it picks up pace, but it is not rapid. If you keep upshifting to a higher gear, it doesn't feel too choked. It will keep moving ahead, but you won't feel that rapid excitement. You won't feel that you are picking up pace quickly. So downshift, be in the meat of the power band in the mid range where this engine really shines, and you will have a good time. And अगर गाड़ी में लोड ज्यादा है तभी downshift करना is the sensible thing to do. Just to demonstrate how tractable this motor is, let us check out if we come to a standstill, क्या ये गाड़ी सेकेंड गियर में easily move होती है या नहीं. So slotting it in second gear, stand still, हल्का सा incline अभी भी है, and slipping the clutch, throttle input, matching the revs, and no knocking, no hesitation. To show that to you one more time. Now in second gear, just slipping the clutch. There is not too much of torque. गाड़ी बंद हो चुकी है. So that is it. That is all that you need to know about this Honda Elevate SUV. क्या आपको ये गाड़ी पसंद आई? Do you think this engine and gearbox performance is good enough for your ownership experience? क्या आप Kia Seltos, Hyundai Creta और MG Aster के मुकाबले इस Elevate को प्रेफर करोगे? Whatever is your opinion, let us know in the comments below. Till next time, subscribe to the Shifting Gears channel, press that bell icon. Always drive safe and always wear your seat belts.